It is indeed a great opportunity for me to be in front of you to talk about and speak about the topic that is Indian Navy, a career of adventure, responsibility, and a lifelong learning. I, Lieutenant Singh Patyal, joined the Indian Navy right after my 12th. I completed my 12th in 2018 and I had the privilege to join the Indian Naval Academy, Zimala, Kerala for my 4 years of training, and I completed my BTech during that training. It is indeed a real pleasure for me to be present here amongst you, and I hope I kindle and guide you and inspire you to join the Indian Navy, a fine service of the nation and a fine gentleman that the Navy belongs to. Before I introduce you to the India's maritime heritage, I would like you to have an insight about the Indian Navy. For that, I have two clips that I'll be playing soon. All of you can observe it and have a bit idea what actually Indian Navy is about, and then we can subsequently talk about it more in our few slides. So basically, today I'll be covering about India's maritime heritage, thereafter role of Indian Navy, and how you can join the Indian Navy, and what life you will have once you join the Indian Navy. So let's begin. I'll request for the lights. The Indian Navy's journey begins where land meets the endless river, where silence is great and courage has stayed. Born of storm, shaped by pressure, forged by the sea. This is a force that stays very, always. It sharpens its edge. Volume बढ़ाने के लिए मेरा वीडियोस में से Everybody tested. Every horizon watched. Every second ready. When you are sitting there on the edge of the storm, there is Dan Barr. The Navy's true power lies in its people. Men and women who carry the ocean in their resolve. And when the moment demands, their discipline becomes action. Their courage becomes command. This is the Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas through a fix-it, sun-lit blood. Indian Navy, forged by the sea. On the seas, broken on the surge. Under the waves, silence becomes weapon. In the air, break through the skies. In every realm, the Indian Navy guards the nation. Relentless, precise, unseen. When the giants turn, they will thirst. When the world watches, they lead. A force that protects trade, secures peace, and shapes the future with its own hands. This is India's shield beyond its shores, a sentinel anchor in discipline. Indian Navy, forged by the sea. Check.
I hope by seeing some of these videos, you might have got an insight about the Navy. Navy is a three-dimensional force that has aircrafts, ships, submarines, commandos. So we operate on land, at sea, beneath the sea, and even in the air. So I'll be pondering upon it subsequently in my slides. So let's start. Firstly, we'll be talking about maritime India. Dear children, as we know, India lies in the center of the Indian Ocean and it has ocean on the three sides. Quickly, I'll tell you some interesting facts about it. Around all the oceans in the world, only the Indian Ocean is an ocean that is named after a country, that is India. So its significance lies in the very gist that Indian Ocean is named after India. Now, it is important for all of us to realize that India's maritime identity has been an integral to the nation's identity. Since the past, India has indulged itself in numerous trades across the Mediterranean Sea, across the Southeast Sea, across the Gulf of Oman. And we are going to talk about it in the subsequent slides. So, India's maritime heritage mostly is the past that India had with its seas. India has always been rich in its trade, cultural links, and vortex of intense maritime activities. In the recent studies that we have conducted, it was found that Indus Valley civilization as well as Mohenjo-daro civilization had remains of docks, of ships, of shipbuilding tools that were used at that time to build ships. And every empire and dynasty has impressed upon India being a national maritime country. You can see different civilizations and different dynasties that ruled across India in the olden days, that is Indus Valley civilization, Lothal, Cheras and Pandyas, Cholas, Kalingas, all have been found in the excavation sites that links with the maritime nation and the maritime integrity of the country. Even predominantly there is a saying that by Alfred Thayer Mahan, one who controls the sea controls the land. And it is truly evident from nowadays scenario. We have been seeing that due to the America-Iran war, there has been a shortage of LPG and fuel. So the person, the country who has a dominance over the sea will surely have dominance over the land, and it will greatly impact what the things happen on land. Similarly, I'll talk about the colonial advent in the medieval era. So as soon as I told you that India had a great mobility as well as integrity towards maritime nation. However, after a few decades, the maritime integrity of India was lost and colonial power started coming in. And it has been impressed upon the historical books that as soon as the maritime integrity of India was lost and India diverted its focus from the sea, we have lost our sovereignty, our independence. And it was clearly evident from 1498 when Vasco da Gama discovered India, he landed in India and started its colonial progressions. With Vasco da Gama in 1498, Portuguese entered in 1505, Dutch entered in 1605, British entered in 1612, and subsequently 1769, the French came. And all this happened because our rulers and our dynasties forgot about the importance of securing our maritime nations. If our marine and naval focus was much more towards the sea, then this could have never happened like the earlier past. We also know this generally happened. I'll share a quick interesting fact about this. So basically, earlier days, there were only two countries that were venturing around the seas to find other lands. They were Spain and Portuguese. So in 1494, there was a treaty of Tordesillas that was signed. Both of the countries are Catholic in nature. So they both had disputes at sea where they wanted to find land and they were fighting across each other's. So they went to the Pope. The Pope told them to deconflict their search around the sea. The Pope told them that anything 370 leagues west of Cape Verde, the Spanish will have their say, and 370 leagues right of Cape Verde, all Portuguese will be there. That's how Vasco da Gama came to India, because he was a Portuguese and he went to the 370 east of the Cape Verde Islands. The medieval period, that is from 1200 BCE to 1900 BCE, however, has
as I told you, been a sea blindness for India. A look at our history clearly shows that India lost focus towards the sea. India lost its independence. However, although we had lost our independence to the country, British, French, Portuguese, still India from its past had a great maritime history and was the best shipbuilders in the past. It is clearly depicted by HMS Trincomalee that was constructed in 1817 at the Bombay Naval Dockyard by Wadias. Wadias was one of the finest builders that resided in Gujarat, and they have built almost all major warships for British, Portuguese and Dutch that came to colonial India. This ship is around 23,000 pounds and is the first warship that was ever built in the entire world. It had 46 guns on it, and it's still afloat on the Hartpool dockyard in UK. Next few examples of this is HMS Minden. The American national anthem, that is Star Spangled Banner, was written on HMS Minden, and HMS Minden was also built by the Wadias in India. So you can see that all of this tell us that India has always been in a maritime progress and prowess with other nations. Our shipbuilding capability was such that even the foreigners used to come here and get their ships built. Similarly, HMS Cornwallis, where the Treaty of Nanking was signed, was an Indian-built ship. Maritime environment. So to bring about a quick glance, but about our coastal regions, India's maritime coastal region is around 11099 kilometers, and it has 1382 islands and islets, that is small islands that are part of India, and these all are under security of the Indian Navy. Now covering about the EEZ, so basically the land part that I showed you in the previous slide, the coastal part is known as the baseline. From that 12 nautical miles ahead is considered as the territorial waters. A country has full rights of air, land and water in the territorial waters. After 12 nautical miles, at 24 nautical miles is the contagious zone. In contagious zone, it can take any action related to military as well as constabulary purposes. And after 24 nautical mile is the 200 nautical mile line, that is known as EEZ, Exclusive Economic Zones. What is actually EEZ? EEZ is basically the waters which a country, its own waters which a country can exploit for natural resources like mining, fuel, minerals and fishing. All these are under EEZ. A country can only do fishing in its own EEZ. So the India's EEZ, accounting to the large number of coastline, around 11099 kilometers, total EEZ of India is 2 million square kilometers, and that is also a responsibility of the Indian Navy. Sea dependency. So I'll tell you a great fact. It's very cheap to send goods by sea than by air or by land. For a common example, if I have to buy an iPhone here in India that will be coming from Mumbai, made in Mumbai, and I want it here in Odisha, the cost price of it reaching me will be less than it coming from America to Odisha. So the cost of shipping by sea is very less. That's why all the countries depend upon merchant vessels that transfer their goods from one place to another. So the 90% of the volume of trade and 70% value of India's trade is done by sea. It moves by sea. 90% of the trade that happens, imports, export, is done by sea, and 70% values of India's total trade is done by sea. Similarly, we have all seen that 11% of the energy needs are met through offshore petrol zone. So what is the 88% coming from? It is all coming from the sea. We have seen presently Indian Navy is conducting Operation Urja Suraksha, the America and Iran war. Due to the choking of the Gulf of Oman, our LPG tankers, हमारे जो LPG tankers हैं, हमारे जो पेट्रोलियम tankers हैं, वो इंडिया नहीं आ पा रहे, जिसके कारण फ्यूल प्राइस राइज हो रहा है. वो क्यों राइज हो रहा है? क्योंकि सिर्फ 11% जो टोटल हम तेल और डीजल और LPG यूज करते हैं, वो हम अपने इकोनॉमिक जोन वाले ऑफशोर पेट्रोल ODAs बोलते हैं, ऑफशोर डेवलपमेंट एजेंसी से हम ले सकते हैं, जो रिलायंस, CRG वगैरह हैं,
जो हमारे पानी में ही तेल निकाल रहे हैं। बाकी 88% of fuel, oil, LPG that we are using in our cars daily is coming from West East Asia, that is Iran, Sudan, UAE, and due to the recent America-Iran war, it has been hindered a bit. Marine and fisheries. It is a very interesting fact that all coastal regions in India have been indulging in fishery, and that has resulted in India being the second largest donator of marine fisheries and exporter of marine fisheries, China being the first. So marine sector also helps in the livelihood of a lot of people on the coastal region, and it exports around 7.76 billion USD. जितने हम फिशेज एंड मरीन लाइफ पकड़ते हैं हमारे कोस्टल रीजन में, वो सब हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारे देश की जीडीपी में इतना सपोर्ट कर रही है, एंड दैट इज सेकंड हाईएस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज 8%. So that's why our waters and seas are important, because it's not only helping the communities that are doing fishing, but also India. Scale India initiative. So due to this, in the government has realized that India, if has to become a superpower, it has to have good maritime link, and maritime link and maritime security can only happen if we have a good navy, be it a merchant navy or Indian navy. Navy in the per se means we should have a good fleet of ships that can be used for mercantile missions, that is shipping, transport of goods, containers, and a good number of ships that can be helped for protecting the same. So there are skill initiatives. We have port developments. A lot of Indian ports are being developed in the entire coastline. They are serving as hubs for export, import of goods, as well as they are helping in generation of professional equipment, like people are laying submarine cable in this. There are offshore drilling that is happening in the Indian waters. So basically जो स्किल डेवलपमेंट है पोर्ट्स का, वो तभी होगा जब हमारे लोग डेवलप होंगे, और जैसे ही हमारे पोर्ट्स आ रहे हैं, नए नए डेवलप हो रहे हैं, वैसे ही लोगों को हमें इंडक्ट करना पड़ रहा है. आप जैसे लोग जो हैं वही आके ये चीजें संभाल रहे हैं, सबमरीन केबल, ऑफशोर पेट्रोल में जाके शिप बिल्डिंग में हेल्प करना, इंजीनियर्स बनना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेट्टीज, ये सब काम हम जैसे लोग और आप जैसे लोग कर रहे हैं जो अपनी स्किल डेवलपमेंट और पढ़ लिख के आगे जा रहे हैं. Now coming to Indian Navy, the maritime security and national prosperity of India directly depends upon how strong the Navy is. So presently the Navy is having 150 ships and submarines, over 300 aircrafts, and it has multi-dimensional capabilities and network fleets. So entire Navy works on fleet operations. Presently we are having two fleets, that is Western Fleet and Eastern Fleet, and all ships are network centric in operations, and they have good network and network operations, and they have good bonding between them. Now coming on to multi-dimensional capability. So I have already told you that Navy is the only force that flies in the air, works on the seas, works below the sea, and also on the land as marine commandos are there. Similarly, we also have UAVs, that are unmanned aerial vehicles. The recent development in the Russia-Ukraine war and the America-Iran war, you have seen कि अभी जो पूरा डेवलपमेंट है वॉर का, वो सिर्फ अनमैन्ड वॉर फाइटिंग में हो गया. जैसे इसलिए इंडिया भी अपनी अनमैन्ड कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है. अनमैन्ड इन द सेंस ड्रोन्स, अनमैन्ड व्हीकल्स, अनमैन्ड सेलिंग वेसल्स that are coming up in Indian Navy as well. So a brief organizational debut about the Indian Navy. The head of Indian Navy is a 4-star admiral, that is Chief of Naval Staff, and his headquarters is in New Delhi. He works along with a good tandem with all the three forces, chiefs, that is Army, Air Force and Navy, work together to deliver whatever national agenda that India is having. Next we have underneath the CNS we have 3 commands, that is Mumbai, Vizag and in Kochi. The Mumbai command is known as Western Naval Command, and the head of the Western Naval Command is CNC West. In Vizag we have the Eastern Naval Command, and the head of the Eastern Naval Command is CNC East. And then the south is the Southern Naval Command, and its head is CNC South, and it's in Kochi. The Southern Command is a training command, so all naval training that is for sailors, officers happens in Kochi.
Ab initio training as well as advanced and specialization training happens in Kochi. So as I was discussing about the operational commands, on the west we have Mumbai as the Western Command, and on the east we have Visakhapatnam as the Eastern Naval Command. Southern Command is a naval command that is associated with training. For training in electrical engineers, we have electrical engineering training camp in Jamnagar, that is INS Valsura. Then for logistics training, we have INS Hamla in Mumbai. For engineering training, that is mechanical engineering training for ships, we have INS Shivaji in Lonavala. For training on tactics and war fighting capabilities of Navy, we have Naval War College, that is in Goa. Then we have Naval Academy, that is in Izamala, Kerala. That is training for there for training of officers. All officers who are inducted in the Indian Navy train in the Naval Academy in Kannur. Then we have executive training in Kochi. There are different set of schools, that is INS Dronacharya, ASW School, Anti-Submarine Warfare School, Navigation Direction School, Communication School, which are all based in Kochi, INS Vendarathi. This school provides training for executive officers, general service officers who serve on board ship. So they have a knowledge about all things like gunnery, that is gun related, anti-submarine warfare, warfare related to submarines, navigation and directions. Navigation is a crucial thing for a ship to move, and every executive officer should know how to navigate a ship. So that happens in Kochi. Then submarine training happens in Visakhapatnam. This is there's a command. There's a INS Satwana is there in Visakhapatnam. That is the submarine school for Navy. All the submariners in the Navy go to INS Satwana in Visakhapatnam for their training. For sailors, all personnel who are not officers are known as sailors in the Indian Navy. They do their ab initio training and special training in INS Chilka. Then we have Port Blair. Port Blair is tri-service based presently, and it has a SINCAN. SINCAN is Commander-in-Chief, Andaman Nicobar Command. So it is a tri-service command in which Army, Navy, Air Force together work on these islands, and they are very crucial for India. Now talking about the roles of Indian Navy. The first role that Indian Navy possesses is military. Military role means war fighting. Anytime India is provoked or has to go for war, Indian Navy will be ahead. Then there is the role of diplomacy, diplomatic role. We often work with and go to different countries on a diplomatic mission. In a navy of a country is more of a power projection. The stronger the navy, the stronger is the country. So we often do port calls in friendly nations, and we have exercises with their navies. So all diplomatic purposes के लिए हम दूसरी countries में जाते हैं. Then there is constabulary role. Constabulary role, as the word suggests, constabulary role means policing. So basically जितने भी Indian waters हैं उसमें law as well as order establish करने के लिए government की help करना Indian Navy का काम है. So we have anti-piracy operations, asymmetric warfare operations. Then we do patrolling of our coastal areas. Then we ensure that there is no drug trafficking, human trafficking, or illegal goods being transferred at sea. So all this comes under constabulary roles. Then there is benign. Benign का मतलब होता है peace. So basically जब ना लड़ाई चल रही है ना कुछ चल रहा है, तब natural disasters होने की बहुत संभावना रहती है. जैसे उड़ीसा या विशाखापट्टनम या फिर कई जगह जितने भी फ्लड्स आते हैं, जैसे सुनामी हिट होता है, तो इंडियन नेवी प्रोवाइड्स HADR assistance, that is humanitarian and assistance and disaster relief to all the people who are stuck in floods or fire or by tsunami or cyclone areas. So that's the fourth role of Indian Navy, that is benign role. Now coming out to the branch structure. So executive branch is known as the infantry of the Navy. Basically, if you want to serve on ships and you want to command a ship, you have to be of an executive branch. Then we have medical branch. Medical branches, as such, we are going for sailing on long deployments around 30 to 45 days. We need a medical officer on board who can look after the health, hygiene and habitability conditions on board ship. क्योंकि कभी भी हम डिप्लॉयमेंट में जा रहे हैं तो किसी को भी इंजरी हो सकती है, लग सकती है. So we have military medical officers and medical sailors who are inducted and they are specially trained
for medevac, that is medical evacuation, war casualty maintenance, and creating facilities on board ship for medical purposes. So that is comes under medical branch. Then there are education branch. जैसे नेवी में हर कोई ट्रेनिंग कभी रुकती नहीं है, तो नेवी में एजुकेशन ब्रांच की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें कंटिन्यूसली ट्रेन करने की जरूरत है. सो एजुकेशन ब्रांच ऑफर्स ट्रेनिंग टू ऑल पीपल, बी इट ऑफिसर्स, बी इट सेलर्स. दे आर स्पेशलाइज्ड इन स्पेसिफिक कोर्स, बी इट गनरी, एनडी, एएसडब्ल्यू, और बी इट मैथ्स, फिजिक्स और बेसिक्स. So they can teach cadets, officers and sailors in anything they are specialized in. Then comes the electrical branch. As Navy is a technology intensive and technological driven force, we have a great need for our electrical equipment to be in high standard of war fighting capability. So ये capability तभी attain हो सकती है जब हमारे electrical knowledge और हमारी समझ technology के बारे में अच्छी हो. तो इसके लिए हमारे एक branch है जिसका नाम है electrical branch. The sailors and officers that are inducted in there are specially qualified for different set of instruments, radar, sonar, जो हम यूज करते हैं, ताकि वो उसकी मेंटेनेंस एज वेल अपकीप पे ध्यान दे सके, और कुछ भी उसमें कोई दिक्कत है then they can rectify that sea without any delay. Then comes marine engineering. मेन शिप का चलना, लड़ना, फ्लोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द मरीन सेगमेंट ऑफ द मरीन ब्रांच ऑफ द नेवी is the one who looks after the moving part and floating part. So basically ship को चलने के लिए बड़े इंजन्स ही होते हैं, और इंजन्स पे हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपल्शन होता है. We have steam propulsion, we have nuclear propulsion, we have diesel propulsion, we have diesel electric propulsion. जितनी भी मरीन इंजीनियरिंग रिलेटेड है, शिप का आगे बढ़ना, ऑक्सिलरीज, हमारे आरओ प्लांट्स, एसी, शिप पे चलना, वो सब देखते हैं मरीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. Now how to join as an officer? So, as I'll cover the intensive program, how to join an officer, I'll just give a brief overview. As soon as you are selected as an officer in the Navy, you are given a commission letter by the President of India that you are under him. As you know that हमारी defense forces की supreme commander is the President. So the President signs your commission letter and tells that you are appointed as an officer under him. Now, for joining as an officer in executive branch, we have different, as I told you, in general service we have different branch. First is gunnery and missile warfare. In ships there are missiles, guns, small arms, big guns, CIWS, that is close-in weapon systems, that are looked after by the gunnery and missile warfare officer. Then we have navigation and direction. Navigation is for ships and direction is for aircraft. So we have a navigating officer appointed on board ships, whose job is to make ship go from one place to another, plan operations of the ship, and ensure safety of the ship in restricted and confined waters. Then we have anti-submarine warfare officers. As हमारे पास भी सबमरीन कैपेबिलिटीज है, हमारे दुश्मन के पास भी सबमरीन कैपेबिलिटीज है, और एक शिप को सबसे बड़ा खतरा पानी के नीचे ही होता है. उसके लिए हमारे पास सोनार हो जाता है जिससे हम सबमरीन को पकड़ सकते हैं. वही सोनार का ऑपरेशन और एंटी सबमरीन से लड़ने की कैपेबिलिटी और उसकी टैक्टिक्स, वो काम करता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑफिसर, एएसडब्ल्यू. देन कम्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर. सो आजकल कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर एक जहाज दूसरे जहाज से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो वो अपने ऑपरेशंस भी नहीं कर पाएगा. इसके लिए एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है जो कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे ध्यान देता है, दैट इज कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर. एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंक्लूड्स जैमिंग, दूसरे लोगों का जाम कर देना सिग्नल, एंड यूजिंग काउंटर मेजर्स फॉर मिसाइल. दीज ऑल कम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर. Then in the executive branch you get as an officer specialization choices between aviation branch. As an aviator in the Navy you can be a fighter pilot, a chopper pilot, a UAV pilot, unmanned aerial vehicle pilots. For submarines you can opt for submarine as an executive officer, same as anti-submarine warfare officer, navigation officer. एंड आप सबमरीन, अब इंडिया के पास न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन भी है, सो यू कैन सर्व इन न्यूक्लियर सबमरीन्स और कन्वेंशनल सबमरीन्स. देन वी हैव मरीन कमांडोज. मरीन कमांडो इज द स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडियन नेवी, जस्ट लाइक पैरा फॉर आर्मी एंड गरुड़ फॉर एयरफोर्स. मरीन कमांडो स्पेशलाइज इन लैंड, सी, अंडर सी असॉल्ट्स, एंड दे आर द बेस्ट commandos in the world, known as best commanders in the world. They are known as Marcos.
नेक्स्ट इज द हाइड्रोग्राफी डिपार्टमेंट. सो बेसिकली आप यही सोचते हो कि हम समुद्र में नेविगेशन कैसे करते हैं, मतलब चलते कैसे हैं. समुद्र में कोई भी रोड नहीं होता. उसके लिए हमारे पास होते हैं मैप्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मैप्स भी होते हैं और चार्ट्स भी होते हैं. उस चार्ट में कितनी डेप्थ है एरिया में, क्या है उसका लैंड, उसके जमीन कैसी है, कितने मीटर नीचे है, कोई रेक है वहां, वो सब काम करता है हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट. सो हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट जॉब इज टू सर्वे द waters of Indian Ocean and provide us with charts for safe navigation, जिससे हम अपनी ships and submarine को safely navigate कर सकते हैं in the ocean. Then a few other branches of executive branch law. So we have JAG entry. So Navy requirements cater for law branch because a lot of cases happen outside as well as inside Navy. That needs to be having strict policies. And I'll tell you, the Navy follows the law of Regs Navy and Navy Act. That is maintained by the law and order of the officer nominated as JAG. Then we have logistics branch. We all have heard famous saying, bullets cannot fly without supply. किसी भी लड़ाई में आप तभी लड़ सकते हो जब आपके पास राशन है, खाना है और एमुनेशन है. तो वो कौन प्रोवाइड करता है? लॉजिस्टिक्स ब्रांच. तो उनका काम है हर जगह देखना कि जो स्टोर्स, इक्विपमेंट्स या शिप के नेसेसरी स्पेयर्स एज वेल एज राशन, मोराल एंड एम्यूनिशन इज देयर, दैट इज अंडरटेकन बाय लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट. देन देयर इज एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच. जो आपने एयरपोर्ट्स में देखा होगा, जो फ्लाइट्स को कंट्रोल करते हैं, लैंडिंग कंट्रोल करते हैं, उनको एटीसी ब्रांच बोलते हैं. देन देयर इज नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन ब्रांच. सो जितने भी नेवी में वेपन्स और आर्मामेंट्स लगे हैं, उनकी इंस्पेक्शन करने के लिए एक स्पेशल ब्रांच है. दीज ऑफिसर्स एंड मेन आर ट्रेन्ड स्पेसिफिकली फॉर स्पेशल फॉर डिस्टिंक्टिवली वन वेपन. इफ दे आर ट्रेन्ड फॉर ब्रह्मोस देन और ब्रह्मोस और स्टिल मिसाइल, दे विल इंस्पेक्ट दैट मिसाइल. तो उसकी वो मिसाइल ठीक चल रही है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसमें कोई सेफ्टी हैजार्ड तो नहीं है, वो काम करने का काम है नेवल Armament Inspectorate. And the last is Information Technology, that is ITO branch. So basically Navy में most of the work is done in computers and it's a technology driven force, so we have to stay ahead with time. So हमारे पास एक IT ब्रांच है जिसका काम है हमारे कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसको सिक्योर करना. That is encrypted and encrypted डाटा यूज करना, क्रिप्टोग्राफ्स यूज करना, एंड हमारा डाटा फ्लो स्मूथली जा रहा है, एंड उसको हैकिंग या साइबर थ्रेट से बचाना. इसके लिए हमारी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच है. देन टॉकिंग अबाउट टेक्निकल ब्रांच, एज आई डिस्कस, मरीन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज वी डिस्कस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिक टू एयरक्राफ्ट. जो भी इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट पे काम करते हैं उनको अलग से डिग्री दी जाती है जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की है. देन वी हैव नेवल आर्किटेक्चर. जो शिप डिजाइनिंग होती है और सबमरीन डिजाइनिंग होती है, ये नेवल आर्किटेक्चर में आता है. ये लोग ही हैं जो हेडक्वार्टर्स में डिजाइन करते हैं ऑन पेपर की शिप कैसे होनी चाहिए, उसके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, उसकी फ्लोटिंग कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए ताकि वो स्मूथ और तेज चले. वो सब नेवल आर्किटेक्चर ब्रांच का काम है. A few pictures. This is for naval education. Naval education में मैंने बताया you can opt for as a teaching branch. You can be teaching officers, cadets and sailors about navigation, direction, anti-submarine warfare, gunnery, communication, hydrography, oceanography and meteorology. Meteorology is basically climate. जितना भी climate warning आती है, वैसे ही नेवी जो है एक ऐसी फोर्स है जो दुश्मनों के साथ साथ क्लाइमेट से भी लड़ती है, क्योंकि हम हर रोज समुद्र में जा रहे हैं जहाँ पे तूफान, बादल, बारिश, वेव्स और पानी के नीचे वाली डिस्टर्बेंस होती है. तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होना बहुत जरूरी है जो हमें अच्छी, करेक्ट एंड गुड फोरकास्ट दे सके कि इस एरिया में डेंजर है, इस एरिया में जाना सही है कि नहीं. And all these people are offered MTechs and BTechs from IITs or NIITs in India. We have the government of India and Indian Navy is having a temporary memorandum signed, which is basically for training in IITs and NIITs, and you will also get degrees for that. This is the naval aviation branch that I was talking about. You can see the pilots, they are in the pilot rigs. This is life in submarine. Imagine being in a confined space, 70 meters in length, and going down around 200 meters in depth underwater, and staying there for 30 days
It's mentally challenging, but it's an adventurous job, and the submariners owe that respect for it. This is a brief diagram how the submarine looks. You can see the torpedo tubes. जैसे आसमान में हम मिसाइलें फायर करते हैं, पानी के नीचे टॉर्पीडोज फायर करते हैं, उनको टॉर्पीडोज बोलते हैं. तो वहाँ पे टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, वेपन स्टोरेज एरियाज एंड प्रोपल्शन बताया है. ये बेसिकली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है. And these are the Marine Commandos, the Special Forces of India, who are the best and elite warriors, best in firing, best in operations, and they also serve in Valley as well as they embark ships when ships are going for patrolling in piracy regions, and they also go for hostage rescue and anti-piracy operations. Recently, Marcos have conducted a lot of operations in the Indian Ocean, and MV Ruben is merchant vessel Ruben बहुत बड़ा एग्जांपल है उसका. एक फॉरेन वेसल था जिसको 30 पायरेट्स ने कैप्चर कर रखा था और 1 महीने से वो कोई भी नहीं पकड़ पाया था. उसमें इंडियन नेवी ने अपना ऑपरेशन किया था जिसमें आईएनएस कोलकाता गया था, मार्कोस को एयर ड्रॉप किया था, आसमान से गिराया गया था, वो उन्होंने बोर्ड किया था और 30 के 30 पायरेट्स को पकड़ लिया था और अराउंड 15 क्रू को उन्होंने रेस्क्यू किया था. तो मार्कोस का काम है एसिमेट्रिक वॉरफेयर और होस्टाइल एरिया में जाके ऑपरेशंस को अंजाम देना. So for the continued growth of Indian Navy, we aspire for professional excellence. अगर हमारी professional excellence अच्छी नहीं होगी, then we cannot do our job properly. Then for this we have internal courses. हम continuously पढ़ाई करते रहते हैं, हमारी पढ़ाई कभी रुकती नहीं है. So for that we have internal courses. And for specialization courses we go to MTechs at IITs, NITs, and even abroad. A lot of exchange programs are going there in Indian Navy, that you studies in foreign universities and get a good hold and grasp how the technology is working and how they are maintaining their ships. So as I was talking about joining as an officer, so this is the criteria. The first entry that all of you can apply for is at the age of 16 and a half to 19 and a half, you can apply for a cadet entry scheme through NDA written exam. Either through NDA Navy or NDA Naval Academy. You can fill up your choices. For that you will have a written exam and you can opt for any branch, that is executive branch as discussed, electrical branch or engineering branch. The next entry is 17 to 19 and a half years, that is 10 plus to BTech entry scheme. For that you have to appear for JEE, Joint Entrance Test, Engineering Test. In that the amount of score you get, उस स्कोर के बेसिस पे आपको कॉल आता है फॉर एसएसबी और मेडिकल क्लियर करने के बाद यू कैन ज्वाइन द नेवल एकेडमी एंड यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द थिंग दैट इज एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग और एजुकेशन ब्रांच. देन इवन इफ आप ये सब नहीं कर पाए, देन यू हैव वन मोर अपॉर्चुनिटी, दैट इज 19 to 24 years of age post your graduation you can apply for CDS exam. CDS is also a UPSC based exam जहाँ पे आप फिर से एग्जाम दोगे, एसएसबी दोगे, मेडिकल दोगे एंड देन यू कैन ज्वाइन एज एन ऑफिसर. इन दिस यू हैव एग्जीक्यूटिव ब्रांच as well as electrical engineering branch. Then there is another entry that is INEC, shortlisting through INEC. If you have done BTech from in any stream, you can apply for engineering or electrical branch as a short service commission officer. As discussed, 19 and a half to 25 executive branch. There are other entries like general service, hydro, engineering general service, electrical general service, information technology, naval armament inspectorate, cadret, logistic entry, naval constructor entry, and these all are for short service commission officers. So if if you want permanent commission, basically difference between the short service commission and permanent commission is a permanent commission officer has to serve for 20 years and short service commission has to serve for 15 years. So generally people who go directly after 12th are the ones who go for permanent commission, and the ones who come from college they go for short service commission. Similarly now men and women are equal, so we have other entries for women and men as well. That is 21 to 25 years of age, you can join as an education officer or as an ADC. Mode of induction is through INEC, that is Indian Navy Entrance Test. Then we have musician entries. If you are a good musician, you can join the Indian Naval Band, which goes around the world for performances and also participates in a lot of competitions across the world. Then there is a sports branch as well for the officers.
You can see a lot of Commonwealth medals have been won by Indian Navy personnel, and even in the last Athletics Federation Championship. For that, you have direct entry. You have to be a graduate. No written exam is there. Navy will pick you up if you are good in your special field. Selection procedure, I'll go through it. Firstly, you have to clear the written exam. Be it INET, be it CDS, be it your NDA written exam. Once you have undertaken you have cleared your written exam, you will be shortlisted and you will be called for SSB, that is Service Selection Board. SSB is a selection procedure, very intensive, 5-day procedure in which there's interview, there's ground task, then there's psychological test, then there's group discussion test, and then finally the conference. If you get selected, I will tell you the joining as an officer, the NDA exam is second most toughest exam in India because it has a joining percentage of 0.5%. So around 10 lakh people gave NDA written exam, out of which 1 lakh get called for SSB. Out of that 1 lakh, only 300 officers are selected for joining NDA. So that is the amount of barriers you have to cross to become an officer. After you have cleared your SSB, उसके बाद आपका आता है medical examination. Medical examination में आपकी body thoroughly scan होती है for any major issues, your physical fitness and any issues that can cause you not to serve in the defense forces, then you are not allowed to do the same. After all this, then there is a merit list that is made. And merit list is made, and according to the seats available for officers, the number of people are called for training in Indian Naval Academy or NDA. Now, in NDA and INA, you have to train for 4 years and complete your course. Then only you can become an officer. If you fail to complete your course, you are not allowed to become an officer. So this is the procedure how you can become an officer. Now, similarly, the sailors or the Jawans that are serving in Navy are known as sailors, are now joining through Agnipath scheme. How to join as an Agniveer? So, first criteria is you can be of an age of 17 and a half to 21 years. That is entry is SSR Agniveer entry. You have to have qualification of 10th plus 2 in physics. That is basically science, maths, physics, chemistry, biology or computer. And for that, stage 1 is shortlisting through computer based exam. Again, you have to study for a computer based exam, that is INET. If you clear that, then you go for stage 2, that is written exam followed by physical efficiency test. In PET, there is a basic standard that everyone needs to complete, that is you should have to run 2.5 kilometers in around 6 minutes, then you were able to do push-ups, sit-ups at a set barrier, then only you can clear the physical and medical test. And the last is the final enrollment. After that, you go to Chilka for your initial training. Note for Agniveers that are musician entry, stage 1 include physical fitness, music test. Those who come for music entry, उनके लिए अलग से music test भी है, and recruitment medical. Different entries that you can join as an Agniveer is again logistics. Logistics में we have cooks and stewards, then we have store sailors, then we have hygienists on board. And musicians. All these entries are metric level entries. For that, you have to just clear your 10th and you can join as an Agniveer. Syllabus for the same you can find it on www.joinindiannavy.com. There is a clear-cut syllabus that you need to follow and prepare for if you want to appear for the INET exam. PFT standards that I was talking about, PT standards. For male candidates, 1.6 kilometer run in 6 minutes 30 seconds, 20 squats, 12 push-ups. You need to pass अगर आपको भर्ती होना है तो. For female candidates, 1.6 kilometer run in 8 minutes, 15 squats, 10 bent knee sit-ups, and finally you have to complete your recruitment medical. So what is exactly Agnipath scheme? So Agnipath scheme is a service tenure of 4 years, including training period. After 4 years, only 25% of Agniveers will be retained and will be enrolled as a regular cadre sailors. Salary package is around 30 to 40,000 per month plus applicable allowances. अगर आप सेलिंग करते हो तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है. आप
ऐसी जगह सेलिंग जाते हैं जहाँ पे थ्रेट ज्यादा है तो आपका ज्यादा अलाउंस मिलता है, आप डाइवर बन जाते हो तो आपको ज्यादा अलाउंस मिलता है। देन देयर इंश्योरेंस कवर, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवर, जो हर एक अग्निवीर के लिए है, जो आपको फ्री बिना कंट्रीब्यूशन के आप जैसे एनरोल होते हैं आपका वो इंश्योरेंस कवर चल पड़ता है। एंड यू ऑल्सो गेट डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशंस इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट्स। After 4 years, Sevanidhi package, you will get money for your service. And Agniveer skill certificate. Now there's a latest policy that has come ki all the Agniveers will be given preference for selection in CAPF and paramilitary forces. So once you have served as Agniveer in Navy and you don't want to continue with the Navy, you can look ahead for other options outside, be it your hobbies, or you can also join CAPF and paramilitary forces, and you will be given preference for that. And also credits for higher education. Now talking about the Indian Navy, I've already shown you a video about Indian Navy and its role. I think a lot of things were visual in that, but I'll explain some of that to you. So Indian Navy, I'll start with the ships. So this is the largest ship a Navy can have, that is an aircraft carrier. So basically एक aircraft carrier ऐसी जगह है, फ्लोटिंग जगह है, फ्लोटिंग एयरशिप है, जहां से आप अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स को लॉन्च कर सकते हैं दुश्मन के एनिमी की लोकेशन पे अटैक करने के लिए या दुश्मन पे अटैक करने के लिए या दुश्मन के जहाजों पे अटैक करने के लिए। देन वी हैव डिस्ट्रॉयर्स। एक डिस्ट्रॉयर एक अराउंड 145 टू 160 मीटर्स के जहाज होता है जो केपेबल है एक पूरे देश को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके नाम इसलिए डिस्ट्रॉयर है। इसमें अराउंड 16 टू 32 ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज होती है ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर के आसपास, वो हमला कर सकते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जो जमीन से सरफेस से फायर होके आसमान में कोई एयरक्राफ्ट आए या यूएवी आए उस पर फायर कर सके। टॉर्पीडोज, जो सबमरीन अगर पे अटैक करना है तो उसको टॉर्पीडोज से उड़ा सके। एएसडब्ल्यू रॉकेट्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट्स फायर कर सके, डेप्थ चार्ज फायर कर सके। और पीछे आप देख सकते हो हेलो हैंगर है। हर एक डिस्ट्रॉयर में एक एयरक्राफ्ट जरूर रहता है। हेलीकॉप्टर फॉर सार ऑपरेशंस, फाइटिंग कैपेबिलिटी ऑपरेशंस, लाइफ बोट ऑपरेशंस एंड ऑल, एक हेलीकॉप्टर जरूर रहता है। These are destroyers. Destroyers का ही थोड़ा सा नीचे वाला वर्जन रहता है फ्रिगेट, with less weapon complement, we call them frigates. These are two frigates shown in the pictures. Then जब फ्रिगेट से भी नीचे हमारे आते हैं कॉर्वेट्स। सो फ्रिगेट्स के से भी छोटे जहाज जो होते हैं वो कॉर्वेट्स होते हैं। कॉर्वेट्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं। या तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट होगा तो वो स्पेशलाइज होगा सिर्फ सबमरीन को हंट करने के लिए। कोई सबमरीन हमारे पानी में है तो उसको मार गिराने के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट। वैसे ही पेट्रोल शिप्स एंड मिसाइल कॉर्वेट्स होते हैं। मिसाइल कॉर्वेट्स जैसे 1971 वॉर में किलर स्क्वाड्रन थी जिसने कराची को पूरा तहस नहस कर दिया था, उसमें किलर्स स्क्वाड्रन जो है वो मिसाइल बोट्स और मिसाइल कॉर्वेट्स थी जिनको हम लेके गए थे पाकिस्तान के पास। उन्होंने मिसाइलें फायर करी थी और वापस आ गए थे। वो उनका बेसिक काम है अपने हिसाब के काम के हिसाब से अटैक करना, वो छोटे साइज में। देन नेवल एविएशन की बात करें तो हमारे पास हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है MiG-29K। देन वी हैव हॉक्स एज ट्रेनर एयरक्राफ्ट फॉर लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल। हम अपना मैरीटाइम अवेयरनेस हमेशा एक्टिव रखते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कौन सी शिप किस जगह पे है, हमारी शिप दुश्मन की शिप या फिर कोई हमारे बाउंड्री में आ रहा है, तो उसके लिए सर्वेलेंस के लिए ये प्लेन यूज होते हैं। सबसे ऊपर आपको देख रहे हो वो P8I है, P8I, एंड जो नीचे है वो है डॉनियर। देन दीज आर एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स जो हम शिप पे यूज करते हैं, शिप एंड लैंड पे यूज करते हैं। और जब हम सीलिंग डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं तो हम एक हेलीकॉप्टर जरूर एम्बार्क करके लेके जाते हैं जो हमारे बहुत काम आता है फॉर सर्वेलेंस, फॉर स्पॉटिंग रोल्स, फॉर गन्स एज गन कैरियर्स, देन फायरिंग ऑफ टॉर्पीडोज और एयर अर्ली वार्निंग रेडार्स इन केस ऑफ कामो। तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं वो हेलीकॉप्टर है सीकिंग। देन इस साइड पे है कामोव, दैट्स अ रशियन एयरक्राफ्ट। ये इंडिया का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है LH, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। और इंडिया ने लेटेस्टली इंडक्ट किया है MH-60R जो अमेरिका से हमने लिया है, दैट इज ऑल्सो एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर। तो जितने भी हेलीकॉप्टर यूज करती है उन सब का सेट और डिफाइंड रोल है। जैसे कमोव है तो कमोव अर्ली एयर वार्निंग के लिए भी यूज होता है एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाला एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी यूज होता है। सीकिंग वी हैव टू एज एंटी सबमरीन वॉरफेयर एज और एज फॉर मार्कोस एंड फ्लाइट कैरियर्स।
Then ALH is Advanced Light Helicopter, which is used for SAR operations, similar to as Chetak. Then the UAVs, as आप सबको पता है कि अब हर दिन वॉरफेयर और टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो इंडियन नेवी भी अपने ड्रोन्स इंडक्ट कर रही है। ऐसे ही हमारे पास रीपर ड्रोन है जो ऊपर है, आप इमेज में देख सकते हैं। नेत्रा ड्रोन है जो हम इंडिया ने खुद बनाया है, जो हम सर्वेलेंस के लिए यूज करते हैं। और ये छोटा साइड में ड्रोन है शिलुएट, फ्रेंच ड्रोन है जो हम हेलीकॉप्टर से चलाते हैं। ऑल ऑफ दीज बेसिकली आर यूज फॉर सर्वेलेंस पर्पसेस, हम दुश्मन पे निगरानी रखने के लिए, दुश्मन के एरिया में जाने के लिए बिना अपने को कोई नुकसान होए, और वेपन कैपेबिलिटी भी रखते हैं जिनसे हम फ्यूचर में दुश्मन पे अटैक भी कर सके यूजिंग आवर ड्रोन्स। Then comes submarines. This is a conventional submarine. We also have nuclear submarine S1, S2, S3, S4. आपने सुना होगा अरिहंत नाम। ये आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में अगर 3 या 4 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं तो उसमें से 2 न्यूक्लियर सबमरीन पे होते हैं। एक इतने कन्फाइंड स्पेस में न्यूक्लियर रिएक्टर रख के उससे पावर जनरेशन करना एक बहुत बड़ी चीज है और बहुत मुश्किल चीज है, और वो इंडियन नेवी काफी टाइम से करके आ रही है। दिस बोट्स जो है सबमरीन्स आर स्पेसिफिकली केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स, दैट इज टेकिंग सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। एक देश पे अगर अटैक हो जाए और उसको न्यूक्लियर हमला करना पड़े तो ये कैपेबिलिटी ये सबमरीन्स अपने पास रखती है, इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड रहता है। नाउ टॉकिंग अबाउट लाइफ एट सी। सो लाइफ एट सी इज अ बिट चैलेंजिंग। आपको हर दिन चैलेंजिंग काम करना है, आपको अपना काम करना है, आपको अपना काम परफेक्शन से करना है, आप उसमें फॉल्टर नहीं कर सकते। हल्की सी भी गलती आपकी या आपके साथ वाले की जान की बात आ जाती है, इसलिए आपको बहुत प्रोफेशनल होना पड़ता है। वन ऑफ द एग्जांपल दिस इज लोअरिंग ऑफ सी बोट। एवरी शिप हैज सी बोट्स, सो हम इसको चलते चलते जहाज से लोअर करते हैं इन केस अगर कोई मैन ओवरबोर्ड हो जाए, कोई पानी में गिर जाए, या फिर कोई वेसल जिसको डिस्ट्रेस में है या फिर डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए, और या फिर बोर्डिंग ऑपरेशंस इन केस कोई होस्टेज इमरजेंसी है, किसी वेसल पे किसी पायरेसी या पायरेट्स ने हमला कर दिया है तो उन पे बोर्डिंग के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लोअरिंग ऑफ बोट व्हाइल एट सी। दिस इज एग्जांपल ऑफ हेलो ऑपरेशंस। आप सबको पता है एविएशन ब्रांच इज वेरी डिफिकल्ट, बट नेवल एविएटर्स आर अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एक चलते जहाज पे और छोटे एरिया में एक हेलीकॉप्टर को लैंड करना या एक प्लेन को लैंड करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम, और उसी के लिए हमारे पायलट्स बहुत ट्रेन होते हैं। आप देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर चलते जहाज पे लैंड कर रहा है, जहाज भी चल रहा है, हेलीकॉप्टर भी चल रहा है, उनको तालमेल बना के एक दूसरे के ऊपर सही से लैंड करना है, सेफ्टी से लैंड करना है। This is life at sea. This is known as RAS, light jack stay. So we can RAS is replenishment at sea, and this particular evolution is known as light jack stay. तो हम 2 जहाज को बिल्कुल पास में लेके आके पर्सनल ट्रांसफर कर सकते हैं, राशन ट्रांसफर कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर ट्रांसफर कर सकते हैं, आर्म्स एम्युनिशन ट्रांसफर कर सकते हैं, और हम रिपीटेडली एक्सरसाइज समुद्र में करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 2 जहाज के बीच में एक रस्सी है, दोनों जहाज चल रहे हैं पानी में, और उनके बीच में से एक मैन ट्रांसफर चल रहा है। सेम एग्जांपल आप देख सकते हैं 2 जहाज कितना पास आके एक साथ चल रहे हैं, और फ्यूल इसी तरीके से फ्यूलिंग भी होती है। नेक्स्ट, एक जहाज में हम बहुत सारा मिसाइल्स, आर्म्स, एम्युनिशन, एंड वी आल्सो टेक अ लॉट ऑफ फ्यूल अलोंग विद अस, तो देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ फायर। सो एवरी सेलर ऑफ इंडियन नेवी, जितने भी इंडियन नेवी में सेलर, ऑफिसर्स या कोई भी इंसान शिप पे काम करता है, सबको बेसिक फायर फाइटिंग आती है। And this is an example. This is support alpha team with their full gear entering a compartment जहाँ पे आग लगी है। तो इन्होंने अपना फायर रिटार्डेंट सूट्स पहने हैं जिसको ब्रिस्टल सूट्स बोलते हैं, पीछे इन्होंने जो सिलेंडर पहने हैं इसको बास्का बोलते हैं, ब्रीथिंग एपरेटस, क्योंकि जब फायर फाइटिंग करने के लिए आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ धुआं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इससे आप सांस लेते हैं। हेलमेट्स हैं, उनके हाथ में TIC है, थर्मल इमेजरी कैमरा, जो जहाँ पे आग लगती है उसकी सीट ऑफ फायर ढूंढ के वहां पे फायर फाइटिंग कर सके। तो हर एक सेलर या ऑफिसर जो भी नेवी में ज्वाइन करता है वो अपने आप में एक फायर फाइटर होता है। उसको बेसिक फायर फाइटिंग से लेके न्यूक्लियर वॉरफेयर में कैसे फायर फाइटिंग करनी है, या न्यूक्लियर वॉरफेयर में कौन सा इंजेक्शन कैसे लगाना है, न्यूक्लियर फॉलोआउट में क्या एक्शन लेने हैं, वो तक की ट्रेनिंग दी जाती है। This is one of the example of medical evacuation. So this is a classic
एनआर स्ट्रेचर बोलते हैं, नील रॉबर्टसन स्ट्रेचर, जिसपे एक मेडेवैक प्रैक्टिस चल रही है। इन केस ऑफ अ कैजुअलिटी हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरी शिप से, या फिर हम किसी शिप से लेके आए हैं तो अपने मेडिकल रूम में ट्रीट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द शिप एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन बोर्ड। जैसे जितने बड़े जहाज होते हैं उन पे ज्यादा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लाइक कैरियर्स एंड टैंकर्स, एंड दे कैन बी यूज्ड एज हॉस्पिटल शिप्स ड्यूरिंग वॉर टाइम पे उनको हॉस्पिटल शिप्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। Then again, if you want to join Indian Navy, you have to remain physically fit all the time. So Navy में sports के लिए बहुत emphasis दिया जाता है। तो at sea भी ये देख सकते हैं आप, समुद्र में हमने नेट लगा के वॉलीबॉल खेलते हैं, सुबह पीटी होती है, योगा होता है, एंड जो भी टाइम मिलता है एट हार्बर, बास्केटबॉल, फुटबॉल मैचेस, you have great infrastructure in the Navy for playing sports, and if you want to learn sports उसके लिए भी आपको encourage किया जाता है। वैसे ये एग्जांपल है, जैसे लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, इस वॉलीबॉल को हमने रस्सी से बांध रखा है नेट के साथ, ताकि पानी में गिरे ना तो हम खींच सकें। अगेन दिस इज अ फोटो ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर पे लोग मस्टर होकर इनका अपना जोश वॉर क्राई कर रहे हैं, और पीछे आप देख सकते हैं हमारे सारे फाइटर एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं। So Indian Navy as a whole is relevant that it's a way of life. मतलब आप एक बार इसको ज्वाइन करोगे तो this will become your entire life. आप चीजें सीखते रहोगे, आप चीजें करते रहोगे, आपकी लाइफ एडवेंचरस होगी, एंड it will be imbibed in you कि आप कैसे एक्ट करते हो। This is a classic picture, वो आप राइट साइड में देख सकते हो, लोअर मोस्ट कॉर्नर में। You will have opportunity to go for water sports like sailing, yachts, then rowing, उसमें आप पार्टिसिपेट करके आप सीख सकते हो। Submarine branch, then people after their fleet matches, you will have to work on niche technology, ऐसी टेक्नोलॉजी जो आप दुनिया में बेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर आप काम कर रहे होंगे, और हर चीज आप सेफ्टी से कर रहे होंगे। वहाँ पे एक डाइवर्स भी है, यू कैन बिकम अ नेवल डाइवर, जो पानी के नीचे जाके दुश्मन की सबमरीन या दुश्मन की शिप्स पे माइंस लगाते हैं, या फिर ऑर्डिनेंस डिस्पोजल करते हैं, या अपनी शिप के डाइव करके क्लियरेंस करते हैं, या चेक करते हैं कोई इश्यू तो नहीं है, और डैमेज कंट्रोल में डैमेज में बात करते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डायमेंशनल थिंग्स यू कैन डू इन नेवी। एज आई डिस्कस, नेवी इज अ मल्टी डायमेंशनल फोर्स, जो हमने अभी पूरे प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया। फाइनली स्पोर्ट्स, we have INS सुदर्शनी एंड INS तारंगिनी, जो टॉल शिप्स हैं। तो टॉल शिप्स ऐसी शिप्स होती हैं जिनको हम पुराने टाइम के हिसाब से, जैसे पुराने टाइम में हम सेल्स डाउन करके चलाते थे, वैसे चलाते हैं। तो आप ऊपर जो दिख रहे हैं टॉल शिप्स, लोग उस पर चढ़ते हैं, ये एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है। आप सेल्स डाउन करते हैं और हवा की मदद से आप सेलिंग करते हैं, यूजिंग ओल्ड मेथड्स, चार्ट्स, नेविगेशन थ्रू स्टार्स, आप सेलिंग करते हैं। वैसे ही वाटर स्पोर्ट्स में यू कैन सी सेलिंग एंड याचिंग। This is parade. As you look, this drill is the bedrock of discipline. So in Navy, you will, as you become officers or sailors, you will be trained to do parades, drills, with weapons, without weapons, khali hard drill. Then you have weapon drills with rifles. Then you have sword drill for officers. Officers march with sword. So ये सब आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। एंड इस बार भी इंडियन नेवी बेस्ट कंटिजेंट, 26 जनवरी को जो आरडी परेड होती है, इंडियन नेवी को बेस्ट कंटिजेंट का अवार्ड मिला है, जो बहुत बड़ी बात है। दे आर बेस्ट इन परेड उस साल के लिए। इन द एंड आई विल शो यू वन मोर इलैबोरेट वीडियो ऑफ इंडियन नेवी टू समराइज, और जो भी आपको समझा आप रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो से इन द एंड, and that will be the completion of my PPT after this. Can you switch off the lights, please? At the edge of the horizon, where light meets the unknown, the sea forges its own warriors. Born not from conquest, but from challenge. Here, every sunrise is a signal, every tide a test. From this surf is forged a force, not to chase glory, but to guard it. Steel and spirit,
salt and blood. Indian Navy, born of storm, built for supremacy. Indian Navy, forged by the sea. Strength does not always roar. Sometimes it whispers to the hum of an engine below the surface. A sonar pulse, a coded command. The Navy sees detail. Every second mapped, every ripple known. Mongols, the Navy's silent warriors, trained for the impossible, striking where others cannot, the elite arm of India's sea power. Operation Sindhu. Tension rose across the western seas. Within no time, carrier battle crew took position. Radars arrived. The Navy's air arm watched from the skies. Submarines waited in silence. I, as the crown, led from the front line. The message was loud. India's naval might was overwhelming. The adversary was confined to armor. Every Indian uniform leads to the same pulse. Whenever called, the army charges ashore. Naval firepower thunders over the seas, and the Air Force dominates the skies. In every exercise, they sharpen the edge of national power. Their joint missions are not drills. They are rehearsals of unity. The choreography of three forces that move as one heartbeat. True knowledge is built, not borrowed. Across Indian shipyards, metal meets imagination. Designers, welders, engineers, trimmers in blue overalls. Their creations become names whispered with pride. 2025 marked a milestone. 10 indigenous naval platforms commissioned. Surat, Nagari, Vakshi, Armada, Obey, Hingari, Angkor, Vistar, Iksha, Maya. Each ship a sentence in the story of self-reliance. And the weapons conceived on our soil, maintained by our dockyards. The path is clear. The Indian Navy strives to become fully Atmanirbhar by 2047. The Navy is committed to build bridges of friendships. Our training establishments welcome foreign navies to learn, to trade, and to share a bond only the sea can shake. INS Raina, in the wake of IOS Sagar, sailed with multinational crew from 9 nations, strengthening regional capacity for collective prosperity. EKIM 2025 links Africa and India through trust. Across oceans and continents, partnerships grow, forged in mutual respect and shared purpose. Joint sails become shared strengths. Cooperation becomes security. Every voyage strengthens confidence. Every wave crossed is a conversation. Every port visited, a promise of peace.
When calamities strike, the Navy turns first responder. A burning merchant ship off Canada, flames rising higher than the mast. In no time, the Indian Navy, along with Coast Guard, cut through smoke to pull men from fire. An earthquake shatters Myanmar. 5 Indian ships sailed with food, medicine, and hope. This is Operation Brahma, naval response to the call of humanity. Across the Indian Naval Academy and the training grounds of Chilka, a new generation stands ready. Naval cadets and Agniveers, disciplined, drilled for war and wired for technology. Simulators hum, engines roar, and every command becomes instinct before duty. The gallant will always remember those who stood tall in the storm. Medals and chests, courage in the eyes, stories etched forever in service. The Navy imbibes the spirit of a great civilization. Honestly, Valley circles the world again. 2 women steer in courage. Honestly, Cornelia revives the old art of sailing. Proof that tradition can power the future. And on the ground, naval athletes have excelled at the world stage and won laurels for the nation. Discipline in every game, grace in every victory. From the first line to the last, and all through the night, the Navy keeps a sharp watch. It is the nation's shield, and its strength beneath the calm. Every ship, every sailor, one promise. India's seas will always be secure. This is the Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a fixed sunlit life. Indian Navy, forward by the sea. I hope with the video you might have got a gist of all the things that I have spoken in the entire presentation. वो सबको आपको relate कर पाए होंगे लास्ट जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है. For more details, if you want to know about Indian Navy and how to join Indian Navy, you should go to this website, that is www.joinindiannavy.gov.in. I have ended my speech and I am open to questions, if any. How has modern technology, including AI, changed functioning of the Indian Navy? Okay, so a very good question. As Indian Navy is progressing towards modernization of capability and assets, we have also an AI wing that is continuously working. So अभी हम AI किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं? तो AI आपको पता है कैसे काम करता है? AI works on data. जितना हम डाटा स्टोर करेंगे उसी से मशीन लर्निंग होगी और उसी को आप यूज़ कर सकते हो. तो अभी हमने जितना डाटा हमने लास्ट 20 ईयर्स में ऑक्यूपाई किया है, बी रेडार सिग्नेचर्स ऑफ एनिमी शिप्स और EW सिग्नेचर ऑफ एनिमी शिप्स और अकूस्टिक सिग्नेचर. अकूस्टिक मतलब साउंड ऑफ शिप्स की कितने प्रोपेलर में कैसी आवाज़ होती है. उन सब डाटा को हम हब्स में कोलेक्ट करके वी आर मेकिंग अ लाइब्रेरी.
उस लाइब्रेरी को यूज़ करके वी कैन विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वी कैन डिटेक्ट कि कौन सी कंट्री की कौन सी शिप है, कहाँ पे है, जस्ट बाय फ्लीटिंग ट्रांसमिशन भी अगर वो कंट्री करेगा, वैसे हम ये यूज़ कर रहे हैं। बाकी AI का यूज़ हम अपने इवन करेक्शंस दैट आर देयर इन वेपन फायरिंग, उसमें भी हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी हमारी मिसाइल और गन फायरिंग होती है उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए वी आर यूजिंग AI टू प्रोवाइड करेक्शंस and storing of data. Also all the equipment that we have, शिप पे जितना भी हमारे राडार इक्विपमेंट या फिर सोनार इक्विपमेंट या फिर वेपन इक्विपमेंट लगा होता है, उसमें बिल्ट इन टेस्ट इक्विपमेंट होता है BI बिल्ट। तो वो अपना कुछ एरर होता है उसको AI बता सकता है हमें कि ये कैसे, कहाँ एक डिफेक्ट है, किसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। AI is a great tool, but however we have to keep in mind that how to use it justificately. We cannot rely on it completely. We have to be the real factor is always the man behind the machine. तो वो हमेशा मैनिंग और जो बंदा मशीन के पीछे बैठ के मशीन को ऑपरेट कर रहा है वो रहता ही है। However, the Navy is working a lot in the AI space and we are using it in the day-to-day basis as well. Good evening, sir. Actually, recently we have the inter-school level essay competition in which we have to write about the new India. I have written there about the defense sector as well. In that data, according to ChatGPT, I have seen that the least investment was on Indian Navy. Why is it so, sir? So it depends all upon political agenda. So the government thinks how much they want to invest between all three forces, they invest that way. Moreover, the Indian Navy, the strength wise, if you see, as compared to Air Force and Army, we are less in number. And most of the things that we are producing is indigenous. जितने भी शिप्स अभी हमारे बन रहे हैं नेवी में, वो हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो जो चीज़ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रही है उसकी प्राइसिंग क्या होगी? ऑटोमेटिकली लेस। सो द गवर्नमेंट हैज़ ऑलवेज, हम सोचते हैं नीचे बैठ के कि हमें बजट कम क्यों दिया, उनको ज़्यादा क्यों दिया, बट द गवर्नमेंट हैज़ ऑलवेज अ बिगर पिक्चर। उनको पता है कि इनका इतने बजट में हो जाएगा तो हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई द नेवी हैज़ गॉट दिस बजट। अदरवाइज nothing as such different from that. Other services might need it more than us, that's why they have been allotted more. Also depends on the strength. आर्मी की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से उनका बजट होता है। एयरफोर्स की स्ट्रेंथ हमसे ज़्यादा है तो उनका उसके हिसाब से होता है। हमारी स्ट्रेंथ है और हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आज बजट। Namaste, sir. I just want to know what inspired you to join Navy. Okay, so it's a good question. Like you guys are sitting in these halls, I was also once sitting back in my class auditorium, and someone from Air Force had come to give a lecture on how to join Air Force. And from that only I got motivated to join the defense forces, because all three forces work in the same manner, work for the same thing, and वो एक साथ सेम चीज़, सेम गोल के लिए काम कर रहे हैं। Then I thought कि मेरे को जाना है तो फौज में ही जाना है। From that time I got inspired, and always I had a craze for people in uniform. जो आप यूनिफॉर्म लोग पहनते हैं उसको देख के ही अच्छी फीलिंग आती है, and by default Navy has got the best uniform, so that's one of the factors that motivated me to join the Navy. I hope that you. Thank you, sir.